वेलकम टू नईम अफरीदी साइकोलॉजिकल सर्विसेज नेफ्स यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया है एडिक्शन सीरीज़ और आज हमारा टॉपिक है कोकेन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। कोकेन इज़ अ फाइन वाइट और ऑफ वाइट पाउडर। इट एक्ट इज़ अ पावरफुल स्टिमुलेंट। इट इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ कोका प्लांट। कोका प्लांट से इसको हासिल करते हैं और ये हमारे पास स्टिमुलेंट्स है। इसके अलावा on the street it can be diluted or cut with other substances to increase the quantity। इसके साथ और भी impurities या substances लोग ऐड करते हैं ताकि उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। Crack is cocaine that has been further processed with ammonia or sodium bicarbonate and baking soda and look like small flakes or rocks। नेक्स्ट है वे ऑफ टेकिंग कोकेन को लोग किस तरह यूज़ करते हैं। कोकेन इज़ यूजुअली स्निफ्टेड और स्नोटेड यानी नोज़ के ज़रिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं और इंजेक्टेड। वेयर इज़ क्रिक जो कोकेन का एक फॉर्म है, क्रिक इज़ स्मोक, ये लोग स्मोक करते हैं। कोकेन इज़ अ पावरफुली एडिक्टिव स्टिमुलेंट ड्रग मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कोका प्लांट नेटिव टू साउथ अमेरिका। Cocaine is highly addictive drug that can have serious effect on your health and well-being. Cocaine is an intense euphoric producing stimulant drug. So the effect of cocaine are cocaine can make user feel euphoric। ये लोग यूफोरिक हो जाते हैं या बन जाते हैं कोकेन यूज़ करने के बाद। Furthermore, user often experience a temporary increase in alertness यानी ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, इसकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाती है। The short term effect of cocaine are lose of appetite, faster breathing, increase in body temperature and heart beating, seizure or stroke, cerebral hemorrhage or heart failure। The long-term effect of cocaine or long-term user of cocaine risk a number of health problems, some of them depending on how they take the drug. Sniffing cocaine severely damages nose tissue. Smoking can cause respiratory problem, while ingestion of cocaine can lead infection diseases. Other risks of cocaine include how the drug is taken, including strong psychological dependency, malnutrition, weight loss, disorientation, apathy, in a state of similar to paranoid psychosis। So the behavior of the user may behave bizarrely, erratically, and sometimes violently। Thank you for watching Naeem Afridi Psychological Services NEPS YouTube channel।